Namaste. I am Abhinav Sharma, host for the today's talk on the Hindu roots of Afghanistan. On the behalf of IITB for Bharat, I thank you, our viewers, for joining us today. IITB for Bharat is a group of like-minded IIT Bombay students, staff, and faculty members. It was formed in 2019, and since then, we are working towards establishing a space for Indic civilization values on the IIT Bombay campus. The group members are actively involved in dharmic and social activities. Today, we take immense pleasure in introducing you to Shri Lalit Kumar ji. Namaste, Lalit ji. Namaste. So, brief about Lalit ji. Lalit ji hails from Bihar and did his graduation from JNU and post graduation from Pondicherry University. A banker by profession, he has a keen interest in ancient history and civilizations, a rare combination which you will see. He spent a year in Kabul pre Taliban 2.0 and will talk about his experience and Sanatan roots that are still seen in Kabul. ललित जी आपका स्वागत है आज की चर्चा में ऑन द टॉपिक द हिंदू रूट्स ऑफ अफगानिस्तान। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका जो आपने हमारे इनविटेशन एक्सेप्ट किया ऑन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक एट विच वी फील कि सबको जानना जरूरी है कि पहले क्या था अब क्या है, बिफोर एंड आफ्टर। सो ललित जी, जब भी महाभारत की बात आती है उसमें एक जगह का विवरण है और आई विल से कि मेंशन हुआ है गंधार, जो काफी मिलता जुलता है आज के जिसे कहते हैं अफगानिस्तान। सो फर्स्ट, सिंस यू टेक a keen interest in ancient history and civilization, so I request you to walk us through the history of Afghanistan. So what was it before and what it is today? हरि ओम, नमस्कार सभी को। इतिहास तो प्राचीन है भारत का और उसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनकः पंचमश्चैव जकार पंच दुर्लभम। जननी यानी माता, जन्मभूमि अपनी मातृभूमि, जाह्नवी यानी गंगा और जनार्दन विष्णु भगवान, उसके साथ जनक जन्मदाता पिता। इस मानव जीवन में ये 5 दुर्लभ है और यहाँ पे हम अभी जन्मभूमि की ही बात करेंगे। वह जन्मभूमि जो काफी समय से खंडित होते होते 1947 के बाद आज अपने जिस राजनीतिक रूप में है, सिर्फ वही भारत नहीं है। और अगर हम इतिहास की बात करें तो ऋग्वैदिक काल का भारत में भी अफगानिस्तान का वर्णन आया है। मैं बस एक मानचित्र दिखाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू शो अ मैप। जी जरूर। That map would be just a minute. I think I'm just एक मिनट।
सो इन सारे उसमें जो है ये आई हैड मिस्ड आउट वेयर आई हैड केप्ट। तो ये जो मेरे मेरे विचार से ये मैप दिख रहा होगा, ये मानचित्र जी, सबको दिख दिख रहा रहा है जी। होगा। जी। ये काबुल नदी और ये कुर्रम नदी पंचम मंडल में, ऋग्वेद के पंचम मंडल में नदी सूक्त है। उसमें कई ऋचाएं हैं, जिसमें काबुल, जिसका प्राचीन नाम कुभा है, कुभा का नाम आया है। और क्रमु जो नदी है उसका नाम आया है। तो इन नदियों का जो है नाम आया है अ, ऋग्वेद में पंचम मंडल में, और सप्तम मंडल में भी है, जो कि ऋग्वैदिक पक्त जन ये लिखा है कि उसमें रहते हैं। महाभारत में जो जो वर्णन है वो श्लोक है, आरक्तानाम ते देशा वाहिकम नाम तज्जलम ब्राह्मणाप सदा यत्र तुल्य कालः प्रजापते। ये आरक्त और वाहिक, वाहिक जो है वो आज का वाहली बाख जो प्रोविंस है अफगानिस्तान का, वो है। और अगर मैं ये कहूँ कि जो भी आक्रांता आए, चाहे वो तुर्क आए, चाहे अरब आए, चाहे शक आए, हूण आए, यवन आए, उन्होंने अपनी भाषा में अपने ही विचार से अपने अनुसार स्थानों का नाम भी परिवर्तित किया। और भाषा का प्रवाह जो है वो सभ्यता के प्रवाह से, इतिहास के प्रवाह से मेल खाता है। आज भी अगर हम देखें तो कश्मीर में जिस नदी का नाम हमने किशन गंगा हम कहते हैं, वो सेम नदी पाकिस्तान में जाते ही नीलम हो जाती है। किशन गंगा घाटी नीलम वैली कहलाने लगती है, नीलम घाटी कहलाने लगती है। तो ये जो है काबुल, पहले ऋग्वेद में इसका नाम आया है कुभा के नाम से। और ये सप्त सिंधु का जो क्षेत्र है वो हमारी सभ्यता का की जन्मभूमि रही है। अगर हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बृहद संहिता में भी वाराह मिहिर ने विवरण दिया है। और बृहद संहिता में इस स्थान का जो जो विवरण है उसमें उस स्थान के रहने वाले निवासियों का नाम अवगाण बताया। जो जो बृहद संहिता के 11वें अध्याय में जो श्लोक है, उल्का भी ताड़ित शिखा शिखी शिव शिवतरो अतिवृष्टो यह अशुभ स एव चोला। सो यहाँ पे चोला है, चोला वगाण सित हूण चीना नाम। तो ये इनका वर्णन आया है प्राचीन हमारे उसमें। और इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुषाण का साम्राज्य जो है वह मथुरा तक था। उसी समय कला की भी काफी विकास हुआ। गंधार आर्ट ऑफ स्कूल जिसको हम आज जानते हैं। उसके पश्चात कल्हण की राजतरंगिणी और अलबरूनी के पुस्तकों में हिंदू शाही का नाम आता है। अलबरूनी ने के अनुसार हिंदू शाही का आरंभ जो है 7वीं शताब्दी से या 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य तक का रहा है। कल्हण ने 3री शताब्दी के बाद से ही उसका नाम हिंदू शाही रखा है। और वह मुझे ज्यादा समीचीन लगता है, वो ज्यादा उपयुक्त लगता है। कारण यह है कि इस्लाम का उदय ही जो है वो 6ठी शताब्दी के में हुआ है। तो उस समय फिर तुर्क शाही मतलब मुझे उचित नहीं जान पड़ता है। जी जी जी। और प्राचीन समय में भी, प्राचीन भारत में भी जो अवगाणों की बात कही गई, तो उन्हें भी हमारे समाज में व्रात्य
माना जाता था। ये बहुत ही स्वाभिमानी जन होते थे। और इस पे जो है एक हैं शिखा बत्रा आडवाणी। उन्होंने हिंदू अफगानों, हिंदू पख्तों, पठानों के ऊपर एक वृत्त चित्र भी बनाया है। देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री, शिन खलाई, द ब्लू स्किन। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन वॉच दैट। तो ये हमारे इतिहास की बात रही। अब अगर हम वर्तमान में आते हैं तो मेरे विचार से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 1893 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अफगानिस्तान को अलग कर दिया। और उसके बाद जो है फिर स्वतंत्रता आंदोलन चलता है। भारत के दो टुकड़े होते हैं जो कालांतर में तीन टुकड़ों में बदल जाते हैं। भू राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार ये बंटवारा मेरे विचार से ज्यादा उचित लगता है। यह कहना, धर्म सदैव एक पक्ष रहा है मानव जीवन का, मानव इतिहास का, उससे उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन यह जो है मुझे लगता है कि भू राजनीतिक परिदृश्य उस समय का जो रहा, उसके हिसाब से वैश्विक शक्तियों का, चाहे वो एस्ट वाइल यूएसएसआर हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, नेहरू जी समाजवादी सोच के थे। उस समय तक यूएसएसआर की पहुंच जो है वो तत्कालीन अफगानिस्तान तक थी। और अगर भारत, अखंड भारत स्वतंत्र होता तो यूएसएसआर की पहुंच पूरे हिंद महासागर तक हो जाती, जो आज तो एक विश्व ट्रेड का महत्वपूर्ण पथ है ही, उस समय भी था। तो बंटवारे के पीछे एक कारण यह भी है जिसको कि हम शायद अनदेखा कर देते हैं। आते आते 1990 में फिर तालिबान आया। 2000 में अमेरिका ने अपनी विध्वंसक कार्यकलापों को अंजाम देते हुए वहां पे आया अफगानिस्तान में। लेकिन इन सब के बीच हम यह भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान में 1990 तक लगभग 5 लाख हिंदू और सिख समुदाय के लोग रहते थे। जी जी। 2017-18 में जब मैं वहां पे था तो लगभग लगभग 15 से 20 हजार हिंदू और सिख समुदाय के लोग काबुल में, मजार शरीफ में, जलालाबाद में, मतलब पूरे अफगानिस्तान में रहते थे। धीरे धीरे वो समाप्त प्राय हो गए। पर जो भारतीय सभ्यता के, भारतीय भाषा के और सनातन मूल्यों के जो चिन्ह हैं वो आज भी दिखते हैं, भ्रष्ट, खंडित, लेकिन है अवश्य। वो आप चाहे बामियान बुद्धा को देख लीजिए। बामियान बुद्धा 1990-91 में जब तालिबान आए, उन्होंने जब तोड़ने की घोषणा की, तो बामियान बुद्धा पे वो कोई पहला आक्रमण नहीं था, वो तीसरा या चौथा आक्रमण था। और यह हमें बताने के लिए पर्याप्त है या पर्याप्त होना चाहिए कि सभ्यताएं और सीमाएं एक दिन में नहीं सिकुड़ती हैं। उसके लिए आक्रांताओं के प्रयास के साथ साथ रक्षकों का संपूर्ण प्रयास न होना भी शामिल है। इतिहास तो खैर काफी विस्तृत है, बट मुझे लगता है कि इस समय के लिए इतना परिचय अगर पर्याप्त हो तो उचित रहेगा। जी, ज़रूर। तो ललित जी, जैसा कि आपने बताया कि और
मैंने भी दर्शकों से कहा शुरू में कि ललित जी हैज स्पेंट अराउंड अ ईयर देयर इन अफगानिस्तान। तो ललित जी, आप बेसिकली ही वाज इन काबुल। तो ललित जी, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए, आप वहाँ पर कैसे गए, वहाँ पे आपको क्या दिखा, और क्या-क्या वहाँ पर अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि नहीं, इट वाज़ अ पार्ट ऑफ अखंड भारत। आपने बता तो दिया कि उनको कुछ को तो तोड़ भी दिया गया है, कुछ एक्सटर्नल पावर्स जिनका काम ही यही था। तो आई जी। जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू कि आपने वहाँ पर क्या देखा? अ, मुझे लगता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास में नियति का बहुत बड़ा हाथ होता है। और यह नियति ही थी जो मुझे काबुल तक खींच ले गई। जिसका मतलब अगर अगर हम ये कहें कि आज का भारतीय युवा अगर स्वप्न देखता है कि हाँ, मैं अपने अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में, इफ आई हैव टू टच द जेनिथ, देन the first thing, either Europe or America. That's what they look at. Uh, well, I have been to Europe, not yet to America. But then there was a chance I got a consultant role as an advisor to the CEO of their biggest national bank, Bank Amili Afghan. And being an adventurous person, I said, why not? Let's go there. What's wrong in it? Let's see. प्लस एक चीज जो मुझे हमेशा अभिभूत करती रही है, वह पर्वतों की ऊंचाई। और अपने जेएनयू के दिनों में मैं माउंटेनियरिंग क्लब से भी जुड़ा हुआ था, तो थोड़ा बहुत पर्वतारोहण मैंने भी किया है। तो एंड वो जो हिमालय का, जिसको आज हम हिंदू कुश के नाम से जानते हैं, जी, हिंदू और कुश। जो हमारे उपनिषदों और ऋग्वेद में जिसका नाम उपरिश्येन पर्वत कहा जाता है, उपरिश्येन पर्वत जो है, जब उसकी बात चलती है तो मुझे लगा कि जाना चाहिए। It might be an offbeat thing, but yes, I should go, and I went there for a year. Overall, I would say it was a very nice, very good experience. The often talked Afghan hospitality, I have experienced that firsthand. Uh, the discrimination, yes, that also I noticed. Um, Safety and security, being an Indian, it was a major concern. तो वुहान वायरस के कारण भले ही संपूर्ण विश्व में 2020 में कन्फाइनमेंट लगा और लोगों को पता चला इस एक नए शब्द से, आई वॉज इन कन्फाइनमेंट इन 2017 itself. The strength of Indian passport, I realized that yes, Indian passport is very strong in Kabul. जब मैं गया काबुल में, तो मेरे मनोमस्तिष्क में यह कहीं नहीं था कि मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है। नो, विद ऑल दोज सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड एवरीथिंग, it was told to me by all my well-wishers, family, friends, जाइए, अपना काम करिए, complete your work, complete your tenure, and come back. Again, I would say destiny plays a very important role. And in the age of social media,
It was almost 2009. I met a person, स्वर्गीय गिरिजेश राव जी. Uh, मैं उन्हें भैया जी कहता हूँ. और इतिहास, प्राचीन अ, उपनिषद, प्राचीन अपने अपनी मैं ये नहीं कहूँगा धार्मिक पुस्तकें, बट अपने सांस्कृतिक पुस्तकें और संस्कृत. He was very much instrumental in making me interested, in, and he pushed me in fact. तो जब मैं गया काबुल में, almost 2-3 months after that, मैंने सोचा कि ओके, I should take a vacation for a week and visit my family. Partly because we all are here used to of working 5 days a week. There it was 6 days a week. And partly because Pitri Paksh was coming at that time. तो मैंने अपनी यात्रा की पूरी तैयारी कर रखी थी. भैया जी का एक मैसेज आता है. ललित खिंगल राजा जो थे हिंदू शाही के, उन्होंने गर्देज में एक शिव मंदिर बनवाया था. उसमें एक गणेश जी की मूर्ति थी जो कि खुदाई में मिली थी. उसको पामीर सिनेमा के पास काबुल में एक दरगाह पीर रतन नाथ है, वहां ले जाया गया, जो कि आज वहां के काबुल के हिंदू समुदाय के साथ पूजित है. क्या आप पता लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है? मैंने कहा ठीक है. And with all technological advancement, Google Map and etc., there is no match to human intelligence. जब भी मैंने दरगाह पीर रतन नाथ को गूगल मैप में खोजा, तो मुझे दिल्ली का पीर रतन नाथ मंदिर पे लेके चला गया गूगल. मैंने कहा ये ऐसे नहीं चलेगा. And then I started asking my colleagues and all. There was one person who was residing in the same area. So I said, okay, we will go. We decided that, okay, next week on Tuesday, we will go. It was like, okay, that was suiting me fine. ठीक है. The same said Tuesday, there were, the news of, or rumor, first it started with rumor, and then the news of blasts. Almost 10-15 people died. And there were 3-4 blasts in Kabul at different places. Just for information, I was given there 2 security guards. So my security guard and my driver, they said, no, sir, we will have to just reach apartment. And that too, after the clearance from Afghan police, Kabul police. Without that, we can't leave even the bank building. Okay. The same weekend, I traveled back to India. I went back. And then, you see, after a week, we met. We said, okay, let's go. When I went there, I'll tell you the situation there was as such that from outside, you can't say that this is a temple. When he knocked at the door, after 2-3 minutes, the door was open. And I was really surprised. I'll just show a few photos of that place and that temple. Okay.
So this is the Gardesh, the Ganesh of Gardesh जी I was talking about. जी जी और ये दरगाह पीर रत्ननाथ में रखे हुए हैं। इस जगह पे जाने के बाद मुझे लगा कि एक समाज जब उत्पीड़ित होता है तो अपने बचाव के लिए वो क्या क्या कर सकता है, वो मुझे दिखा वहां। उस मंदिर का नाम जो पीर रत्ननाथ रखा गया, मुझे ये कहीं भी नहीं दिखा कि वहां पे वो जो है जो कि दरगाह है। देयर वाज नो रेज्ड प्लेटफॉर्म टू सजेस्ट कि हाँ कोई डेड बॉडी हो अंदर। जस्ट यू नो एक हॉल नुमा जगह पे भागवत, गीता, रामायण की प्रतियां रखी हुई थी और कुछ मूर्तियां थी। इसके अलावा और कुछ नहीं था वहां। सेवादार ने बताया कि जी यहाँ पे तो कुछ नहीं है, आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। मैंने कहा जी हाँ, वैसे भी मैं बस आया हूँ ये गणेश को देखने के लिए। उनको विश्वास नहीं हुआ कि कोई जो है सिर्फ गणेश को देखने के लिए आ सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं था। ये मंदिर के अंदर घुसने के बाद आपको ये दिखता है। पीछे जो थे हैं ये जी सज्जन, ये वहां पे रहते हैं। ये मेरे गार्ड साहब थे। और ये जो हॉल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बस सिर्फ 2-3 प्रतिमाएं, फोटोज रखे हुए, चित्र रखे हुए हैं। और बगल में ये यहाँ पे आपको रामायण और भागवत और गीता, बस। अगर आप नोटिस करें, क्योंकि चित्र उतना साफ तो नहीं आया है, पर हर्षीनाथ, हर्षीनाथ जी और ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ये देवनागरी में लिखा हुआ था। और यह जो है मंदिर के अंदर की स्थिति है। बस दीवारों पे कुछ कुछ ओम कहीं कहीं लिखे हुए, एकदम सन्नाटा। मैं जब गया था तो उस समय, और ये सेवादार, मैं इनका नाम अभी भूल रहा हूं, इनके अनुसार तालिबान 1.0 से पहले वहां पर हिंदी तक की देवनागरी की पढ़ाई होती थी। अब आप और हम मिलकर यह अवश्य विचारें कि समय के प्रवाह में हमने कितना खोया और क्या खोया, और अगर हमने खोया है तो उसको बचाने का हमने कितना प्रयास किया है। यह एक विचारणीय प्रश्न है हिंदू समाज पे, भारतीय समाज पे, वृहत भारतीय समाज पे। मैं कहूंगा हिंदू समाज ही नहीं, सिर्फ एक वृहत भारतीय समाज पे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये उस मंदिर के दूसरे हिस्से में जब मैं पूछा उनसे कि ये मूर्ति, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, है क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ है। और तब वो मुझे उस मंदिर के दूसरे हिस्से में ले गए, जहाँ पे एक शिवलिंग और कुछ चित्र और सारे चीजें जो आप देख रहे हैं। जी दूसरी चीज जो मुझे दिखी ऑफिस आते जाते समय, अभी भी वहां पे एटलीस्ट 2018 तक एक मार्केट का नाम जो है, सॉरी, समथिंग, मैं अभी भी दिख रहा हूँ। जी जी आप दिख रहे हैं, बट आपका हाँ, स्क्रीन। स्क्रीन चला गया। हाँ, जी एक मिनट, मैं जी अभी दिख रहा है। अभी आया ना। हाँ, जी जी ये वहां पे रमेश मार्केट, काबुल में रमेश। रमेश मार्केट।
आश्चर्यजनक लगा मुझे, तो मैंने चित्र ले लिया इसका। तो उस समय तक जो है तालिबान 2.0 से पहले तक जो है कई चीजें हमें दिखती थी। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस समय मैं गया था उस समय गूगल और विकिपीडिया पे जब मैंने कुछ ढूंढा था तो ये पता चला था कि 11 मंदिर अभी भी ऑपरेशनल थे उस समय तक, जिसमें आसामाई टेम्पल, आसामाई मंदिर शहर में, और कुहे आसामाई, आसामाई पहाड़ी पे जो आसामाई का मंदिर है वो थे। फिर रत्ननाथ मंदिर थे। एक भैरव का मंदिर था। जब मैंने पता किया भैरव मंदिर के बारे में तो यह सुनने को मिला कि भैरव मंदिर जो है वह बंद हो चुका है। वो किसी विशेष पूजा के दिन ही खुलता है, अदरवाइज वो बंद रहता है। तो ये है। इसके साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि हिंदू शाही जो है उन्होंने जो काबुल ऊपर एशियन मंदिर जो है, ऊपर एशियन पर्वत के ऊपर जो 1800 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है, वहां पे आपको मुझे एक दीवार की संरचना दिखाई दी। जब मैंने पूछा अपने, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मेरे या तो मेरे ड्राइवर रहता था या मेरे ड्राइवर और मेरे बॉडीगार्ड्स, बस यही दो लोग रहते थे। तो जब मैंने पूछा उनसे कि भाई ये किसने बनाया है, तो उन्होंने सर पता नहीं, किसी ने कभी बनाया होगा पहले, वो हमें पता नहीं है। तो ये था। और दूसरी चीज जो मैंने देखी वहां पे, इन मंदिरों की ये स्थिति देखने के बाद मुझे थोड़ी सी उत्सुकता हुई। तो मैंने कहा कि काबुल म्यूजियम शुड बी माय फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट टू सी व्हाट इज स्टिल लेफ्ट। तो मैं काबुल म्यूजियम के भी गया देखने के लिए। एंड डिस्पाइट ऑल द डिस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग Taliban era, and after the, 40 years of civil war has really changed Afghanistan and Afghan society. So what I saw was really surprising. I'll just start showing what I saw in the museum. जी That would be a good indication of what still we have. ये जो प्लाकार्ड थे, मैंने इनका फोटो ले लिया। उन्होंने जो इतिहास बताया है काबुल म्यूजियम में, उसमें भी स्टोन एज, metal age, then coins of Afghanistan, the time before Kushan Empire. There are few school of thoughts who say Kushan was a Hindu because on the coins, some Lakshmi and Shiva were engraved on the coins, Kushana era coins, and some they don't consider him a Hindu. And then after that, they jump on the period of Kushan until the rise of Islam. So that was a bit intriguing for me, but anyways. And then the Islamic period and all other things, the collection they had. The moment I entered, I saw this. A nation stays alive when its culture stays alive. And it sounded so antithetical there. I couldn't stop, myself from taking the picture. This is the picture of Kushan. Okay, and sorry for not so good quality of the pictures. नहीं नहीं कोई It बात was all taken by mobile. नहीं जी जी So I wasn't there as a tourist. So whatever I had to make do with that. All these
stone statues, coins, and artifacts. They shout that yes, we have our roots, and whether you call it Harappa Mohenjo-daro or Rigvedic cultural India, like the you see the cultures, the potteries. Not only this, if you look at this, tell me how far it is different from the carving we see on Taj Mahal. This was found in Nuristan. That is another curious name. Nuristan, the province Nuristan, which was named in 1970 sometime. Okay. Before, by the time all its inhabitants were converted to Islam, before it was, from then they started calling it Nuristan. But before that, it was called Kafiristan. Even though almost 65-70% of the population was Muslim there, they were not calling it Nuristan. The moment it became almost 95% Muslim, yes, it became Nuristan. And that reminds me of another instance. This Uparishena Parvat, today we know it as Hindu Kush. Hindu Kush, the killing fields of Hindus. In Persian, the word Kush, we must be knowing it as Khudkushi, for suicide. That was another. And since we are at language, there is one more thing I wanted to just share here, is that there is a place in Kabul called Sherpur and Sher Darwaja. In Banaras, there is a place called Sher. In Kashmir, we have Srinagar. And when I asked Bhaiyaji, he said, no. It is not at all related to the animal Sher, but it is an अपभ्रंश. यह एक श्री का अपभ्रंश है. श्री से वो अपभ्रंश होते होते शेर बना, और वो श्री जो है प्रॉस्पेरिटी, गॉडेस लक्ष्मी, आप जिससे भी कह लीजिए. So you see even the linguistic lineage is there. The from Sher of Banaras to Srinagar of Kashmir to Sherpur of Kabul. The cultural links of India are still intact. The same way, if you look at the Nagaland, Nagpur, Anantnag in Kashmir, and in the south, Tiruvananthapuram, that the name is there just to remind us the contribution of Nag Jati towards the Indian society. That's how I feel. That's how I think. I might be wrong. I don't know. Coming back to the museum artifacts, there were many things, the coins, but what really, told me that yes, they still have some links attached to Indian and Sanatan, with Sanatan, are the Buddhist artifacts kept in museum. This is from Nuristan again. And you see, if you look at the old village houses, घर के जो चौखट होते थे उन पे ऐसी ही कार्विंग होती थी पहले भी. हमारे at least in Bihar I have seen that. These tribal arts we found I have seen in Odisha. These things are very common. And this is a map of Afghanistan. What was found, where.
There are few things I just wanted to show, especially the Shravasti miracle, Buddha. This is, this was found in Khami Jargar, second to fourth century. Uh, Mostly, if you see all those, vigraha or idols, if you say, their face is defaced, mostly. See, this was a fresco. They had preserved it, Buddhas. Look at the eyes, still. The color is gone, but the life one can still see in the eyes. So much of, lost. And there was one photo, I'm just coming to that. Only heads are kept there, you know, the way, this potteries, this item, it is still found in many of Indian households, khal and musal. Okay, look at the motifs. Ali, jewelry. These were found on tilla tape uh, in late 70s. This is another piece of art. These were the photos of Bamiyan and other places where excavations were going on at that time. They had taken the photos. Is deep. We still use it even today. And they were found there, second to fifth century. Oil lamps. Uh, During Diwali and every puja, we still use it. I mean, that should be a very strong indication of our cultural ties, Sanatan roots. Buddha again. You see, all the heads are gone. Only heads. The destruction, whether you see in India or in Afghanistan, it has a set pattern and it has no limits, no bound. All these, artifacts are from the Buddhist period. And that reminds me of one statement made by my one friend, Mr. Abhishek Ojha. He has written it in his book, The Lemon Tea Cha, that, Buddhism is that son of Hinduism who went abroad and earned a lot of name and fame. See here, the swastika on the feet, on the fingers, toe and other fingers of the feet. I'm not sure, but this reminded me of Samudra Manthan, partly because it's broken or other depiction. But this is what I thought when I first looked at this picture. Another, stupa. Japan, US, they all tried very hard and very much to restore the museum. This is another interesting picture. Here they claim that it is of a Greek god, but when I look at it closely, I see in our temples we have Makara Torana.
These are Makara. Okay, but in the description it says that it is the Triton, the Greek god of sea, who calms the waves, sea. But then the interpretations are really personal and subject to one's knowledge, and I'm not that much knowledgeable in this area. This is another story. The story here, it says the Kashyapa brothers. This artifact was found in Kapisha. Kashyapa brothers were originally Brahmins who worshipped Agni, the god of fire in India. They, together with thousands of pupils, converted to Buddhism as they witnessed Buddha's supernatural power. Buddha is seated among them, and Kashyapa brothers with many other personas admiring Buddha. A man and woman of Kushan royals are also seen on the right side. In these royals, these two Kashyapa brothers with their followers. Look at the detailing of the pictures. That is something, that should remind us what we have lost. I mean, I keep thinking about that. There was one artifact of Mesh Ayak. This is interesting. At least in North India, in households, we use this silpatta or lodha. Uh, Probably I can see when it was in the third and second century. It was found there. Again, those objects. This is another interesting gargoyle. Still in temples, we see that in India. And these were the things which, when I went to museum and I saw, I said, yes, today political boundaries are different, but cultural boundaries are still, India's cultural boundaries are still extending. I mean, still, we can trace them till that point. This was the Kushan Empire map. Uh, this is the inscription, and this inscription was of the Greek Hellenistic language, and that reminds me till Taliban 1.0. There was one Ashoka edict in the museum during that period of civil war and Taliban takeover. It was stolen and it is still not traced. So some collector with deep pocket has pocketed it. This also, here the description said that it is Greek mythology story here. But, it is left to interpretation what we can make out of it. This is what I wanted to show basically. The description said it is a Greek artifact, scabbard, but the swastik which we see here, it is clearly Indian. With this pictures, they claimed that yes, this is a Greek artifact. It has a Greek influence, but they very conveniently forget to observe or to mention the swastik all around. This is covered. And a very important artifact which I saw, ओखल and मूसल, यह आज भी हमारे बिहार यूपी में तो एटलीस्ट
आज भी विवाह के अवसर पे इसका प्रयोग किया जाता है, which I saw there. So these things were, clearly indicating me that yes, there is a cultural link of Afghanistan still intact, some cultural links still intact with Sanatan, with Bharat. जी। तो ललित जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि आप उस मंदिर में भी गए, आशामाइट टेम्पल और दरगाह पीर रतननाथ में, तो वो एरियाज अभी भी, लाइक अभी तो 2.0 आ गया है, अभी क्या, बट जब आप गए थे तो वहां पर हिंदुओं की स्थिति क्या थी? काबुल में लगभग 8 से 10 हजार हिंदू थे उस समय तक. Every Friday, almost 20 to 30 of us, some of them from embassy, some of us from the other professions, we used to go there. People from Jalalabad and Mazar-e Sharif, they used to come to stay because Jalalabad और मजार शरीफ उतने सुरक्षित नहीं रह गए थे उस समय. लोग, जितने भी लोगों से मैं मिला वहां पे, हिंदू और सिख समुदाय के लोगों से, everybody was trying to, sell off their properties, whatever price they are getting. And at least 5 of them during my stay there in 1 year, they shifted to India. So persecution was there. I keep asking myself this question. Okay, in 1970, there were 5 lakhs Hindus and Sikh in Afghanistan. In 1990, when Taliban came, there were 2.5 lakhs. In 20 years, 2.5 lakhs Hindus and Sikhs, either they left Afghanistan or they were converted. So it's just that when Taliban came, the process of conversion and persecution was aggravated and accelerated. But the persecution was there. That's why they were leaving Kabul. That's why in 20 years, they had a negative growth of 50% almost. जी। And today, after Taliban 2.0, not a single Hindu or Sikh is there in Afghanistan. Total annihilation. और हमें ये भी पता नहीं है कि उस मंदिर, इन मंदिर की अभी स्थिति क्या है वहां पे। अभी तो पता कर भी नहीं सकते हैं. जी। पर उस समय जो है, जो सेवादार थे, उन्होंने बताया कि इस मंदिर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ के रहने वाले लोगों ने उसको किराए पे ले रखा है और वो पैसे भी नहीं देते हैं, किराए का पैसे भी नहीं देते, और मांगने पे फिर तो झगड़ा जी। होता है और फिर प्रोसिक्यूशन होता है. तो किसी तरह से हम लोग अपना काम चलाते हैं. He only said that yes, it is till 80, 85, there were schools for Hindu communities. Devanagari and Hindi was taught there. And okay, so Anurag is saying that temple is still active. That's very comforting to know, good to know. So yes, persecution was there, and today, as Anurag said, 2 people are there. So yes. जी। जैसा कि मैंने एक व्लॉग में भी देखा था, आपसे मैंने एक बार बात भी की थी नोमैडिक इंडियन ने वहां पे जी. जाकर, तो वो पहली बार था जब मुझे पता चला कि अफगानिस्तान में भी अभी भी हमारे रूट्स जो है उनका कुछ प्रमाण है। और उसने काफी उस व्लॉग में बताया था, और वहां पे मैंने ये भी देखा था कि काफी वहां पे, काफी तो नहीं बट कुछ सेवादार अभी भी इंडिया से जाकर वहां पे सेवा करते हैं। तो एक सेवादार वहां पे थे जो दिल्ली से आए थे। जी.
और ऐसा वहाँ पे चलता था कि हम इंडिया से और भारत से वहाँ पे जाएंगे, वो सेवा करेंगे कुछ समय, फिर वो वापस आएंगे। पर अब स्थिति क्या है, अभी अनुराग जी ने कहा कि 2 लोग तो हैं वहाँ पे। हाँ, मतलब मुझे ये बहुत आश्चर्य होता है। मैं सदैव सोचता हूँ, मैं बस एक कुछ और फोटोज दिखाऊंगा जी। मैं। अ, ये जो है, ये आसामाई हिल का फोटो है। आसामाई जी। literally means the mother of hope in English. अपने अनुयायियों को, अपने बच्चों को इतनी आशा तो दे ही सकती हैं कि हाँ, भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुशल होगा। इस स्थान पे ये टीवी टावर जो है, नजीबुल्लाह ने बनवाया था तालिबान के आने से पहले, कब्जा करके। और लोगों का ये भी कहना था वहां पे, जब मैंने बात किया, कि इस पे टीवी टावर बनवाने के 3 महीने के अंदर ही उसकी सरकार गिर गई थी और उसे फांसी पे लटका दिया गया था। यू नो, आफ्टर ऑलमोस्ट 30 years, people in 2018, 2017, many people have started referring it Kuhu Tower, Kuhu Television. And before that, it was called Kuhu Asamai, the hillock of Asamai. Again, this is the temple of Asamai. You see, inside you don't see any vigrah. Some Hindu and Sikh community people. It was during Navratra, Shardiya Navratra, I had gone there. तो ये मैंने लिया था। सप्तमी था वो दिन शायद। बस यही है, इसी की पूजा होती है वहाँ। कोई विग्रह नहीं, कुछ नहीं, बस दीप जला, एक स्तंभ है, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है। तो मुझे ये लगता है कि इतने वहाँ पे विग्रह तोड़े गए होंगे कि पीपल वुड हैव रिजाइन टू द फेट कि अब साकार ब्रह्म की क्या पूजा करनी है, निराकार ब्रह्म की ही पूजा करते हैं। और ये देखिए, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, जी। आशामय मंदिर। यह मंदिर अफगानिस्तान में अफगान हिंदू समुदाय से संबंधित है। इस मंदिर का निर्माण ब्यात संस्था द्वारा किया गया है। इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, बट वेरी, क्या कहेंगे उसको, बहुत ही जागृत स्थान है। यह कहा जाता है कि सिर्फ देव ही नहीं, सिर्फ भक्त ही देवता से शक्ति नहीं प्राप्त करते हैं, देवता भी भक्ति के सामर्थ्य से शक्ति प्राप्त करते हैं। मुझे आशा है, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि कोई एक दिन आएगा जब हम सभी भक्त वहां पे फिर सशक्त होके जाएंगे, और फिर हमारे देव भी उनसे, हमसे शक्ति प्राप्त करेंगे, और बाकी चीजें जो है सो कि वो अच्छी होंगी। जी। One more thing I just want to show, and after that I'll leave it to you. We all talk about India's role in Afghanistan, India's help to Afghanistan, India's you know contribution to Afghan economy, India's investment in Afghanistan to the tune of $3 billion US dollars, especially. Can Air, Can Air was one among the leading airlines of Afghanistan. At that time, Sushma Swaraj was foreign minister, and I had tweeted her, I had contacted her. You see, the map of India, the way they have shown, I had contacted them also. I messaged them on Facebook, and after 3 weeks of my persistence, this ad was, this billboard was removed from this place. I said, if you can't respect my territory, my political boundary,
what can you respect? So much so for the Afghan loyalty. You know, in Bollywood movies there are many, stories and all where we read Afghan loyalty, Afghan hospitality. Yes, Afghan hospitality is there, but it's more of a, how do I put it? भोजन की बर्बादी ज्यादा है उसमें. और मैंने एक बार ये बात कही थी वहां पे अपने सर्कल में अपने मित्रों से कि आप उत्पादक नहीं हो. आप उत्पादक नहीं हो तो आप उत्पादन में जो समय लगा है, जो श्रम लगा है और जो दुख है, आप उसको नहीं समझते हो, और यही कारण है कि आप इतना बर्बाद करते हो. वेल, दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट फ्रॉम माय साइड. अभिनव जी, ओवर टू यू. जी, तो हमारे दर्शकों के कुछ प्रश्न हैं. जी. तो संजय जी का कहना है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ अफगानिस्तान इज डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान फॉर इंडियन कल्चर, सिक्योरिटी एंड जियो पॉलिटिक्स. The birth of Pakistan was to give a foothold to the world powers in Central Asia. Before that, Afghanistan was, in the grips of USSR. Now, if I say that in corporate world we say no, meet the new boss, same as old boss. The only difference I see is that just because the birth of Pakistan was on the ground of Hindu hate, the two nation theory, which says that no, we are different, we can't live with Hindus. So, my experience has been that an average Afghani, he really, really hates a Pakistani, but holds Indian, better esteem. I won't say high esteem, but in a better esteem. So there only, Afghanistan and Pakistan, they differ because, in Afghanistan, if India really tries and, going by the news items of past 2-3 weeks, backdoor channel is open and they are receptive. Both countries, India and Afghanistan. So, the partition and then our then leadership gave a chance to, occupy Gilgit-Baltistan to Pakistan. That cut us off from the Afghanistan and Central Asia. If that problem is resolved in coming 10 years, 5 years, 20 years, I see a very good relation with the Afghanistan, no matter who is in power. So the difference is there. The difference is there because the partition of Afghanistan was done by Britishers, and at that time it was not a bloody partition like that of 47. And the mindset of an average Pakistani that, a Hindu is a born enemy. So that mindset is different. जी, अगला प्रश्न है विद जी का. Can you throw some light on temple architecture? Was it built in similar manner as we see in Indian temples? No. It was just raised structure, platform. You see, we must understand that the temples which we see when we talk about temple architecture, mostly we talk about, Chola time temples, Hoysala temples, South Indian Tamil Nadu temples. If you look at look in the north, which temple do you see which is from 16th century or 14th century or 15th century? They all are destroyed. The Kashi Vishwanath was in 18th century.
by Ma Ahilyabai Holkar. Okay, so Hindu Shahi in Gardes, there was a Shiva temple from where that Ganesha statue I show I shown. Uh, Today you don't find a trace. So many attacks, so much of destruction uh, that ensured that unless until you really dig deep, the archaeology tries, you don't find a trace. And in India, I would say that our secular governments and secular lobbies, they ensured that from our textbooks, the reference of Hindu Shahi and Hindu past of Pakistan and Afghanistan is removed. So our coming generations, unless until they make an effort to know, they would not know all these things. जी। अगला प्रश्न है स्नेहा जी का। How Buddhism came into existence in Afghanistan before Islamic invasion was there? Any Buddhist ruler? Uh, for me, it would be difficult to say that, but the famous Buddhist ruler we know is Ashoka, and we found the Ashoka addicts in Kapisha or some other place, which I mentioned in my talk that it was stolen when the Taliban came first time in power. So I would say that Ashoka was ruling over that period, that area, that region. जी। How Buddhism came, Buddhism, from my point of view, you see, Buddhism flourished on the roots of Silk routes, the trade routes. So, from Amarkot or even before you come, to Jaisalmer or Delhi, to Amarkot, Peshawar, Kabul, and then to the Central Asia. And Silk routes, there were four Silk routes, and one of them goes to Moscow, some of them through China. And that's why we see that in Iran, you don't find much or many traces of Buddhism, but in countries on these trade routes, you find the traces of Buddhism. So all the traders who were primarily and mainly Buddhist, they took their learnings and teachings of Buddhas with them, and that's how it spread. जी। अगला प्रश्न है संदीप जी के द्वारा कि आपके अनुसार क्या मार्ग हैं जिनसे अखंड भारत का गौरव पुनः लाया जा सकता है? Because there is no denying in accepting that it was a part of Akhand Bharat. जी, So what to do next? हमें यह एक बात अवश्य समझनी चाहिए कि contrary to Western construct of time, Indian construct of time is cyclical. वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट जो है वो लिनियर चलता है, इंडियन कंस्ट्रक्ट जो है साइक्लिकल है. दैट्स व्हाई वी सी कुंभ और अर्ध कुंभ हर 12 वर्ष पे और 6 वर्ष पे आते हैं. और फिर जब हम वापस, अगर साइक्लिकल की बात करें, जब वापस जाते हैं तो वही चीज नहीं रहती है, चीजें बदल जाती हैं क्योंकि समय प्रवाहमान है. हम भले ही लौट के वहां पे जाएं, अखंड भारत हमारा स्वप्न था, है और रहेगा. प्रश्न यह है कि हम उस अखंड भारत के लिए जो मूल्य है उसे चुकाने के लिए तैयार हैं. जी। दूसरा प्रश्न यह है कि जब हम गौरव की बात करते हैं तो हमारा जो मापक है वह होता है साहित्य, कला,
वाणिज्य, समृद्धि में सबकी चहुं ओर प्रगति, उन्नति और समृद्धि। मुझे ध्यान आता है 2-3 वर्ष पूर्व मैं अपने मित्र और अग्रज समित्र श्री परद शुक्ला से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा, ललित तुम हम्पी नहीं गए अभी तक? हमने कहा नहीं। मैं इसलिए नहीं गया कि उनके विनाश की इतनी कथाएं मैं सुन रखा हूं कि मेरा हृदय रोता है बस सोच के। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास जितना बचा हुआ है अगर हम उसी को संजो लें, उसी का ध्यान रख लें, तो आज भी हमारे पास इतना है कि पूरे विश्व में कोई भी देश उसकी तुलना नहीं कर सकता है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। माया, एज़टेक, इंका सब मिट गए, हम आज भी हैं। लेकिन हम आज भी हैं तो किस मूल्य पे हैं? हमने अफगानिस्तान खोया, हमने पाकिस्तान खोया। मुझे आश्चर्य होता है जब भी बात होती है हमारे नेतृत्व के जो भी महत्वपूर्ण नाम हैं, जब बात करते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, why no one talks about Burma, which was taken away from us just for the administrative purpose by Britishers? Why no one talks about that? So, अगर हमें प्राचीन भारत का और अखंड भारत का वो गौरव पुनः प्राप्त करना है, तो हमें चहुं ओर समृद्धि लानी होगी। और यह जो है एक दिन में नहीं होगा, यह एक दिन का कार्य नहीं है, इसमें सदियां लगती हैं। और अगर हम दशराज्य युद्ध को एक पॉइंट माने, एक बिंदु माने, और आज को एक पॉइंट माने, तो भारतीय सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा लगभग 10,000 वर्ष पुराने होंगे। उसमें 10, 20, 50, 70 साल जो है कुछ एक घंटे या कुछ एक दिन से ज्यादा की हैसियत नहीं रखते हैं। तो हमें इतना ध्यान रखना होगा कि हम उसका मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर हम मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं तो हम प्राचीन और अखंड भारत के गौरव को पुनः प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जी। जी। अगला प्रश्न है दुर्गा दत्त त्रिपाठी जी के द्वारा। हाउ डू पीपल ऑफ अफगानिस्तान सी इंडिया एंड हिंदूज? Generally, when I interacted with them, तो इंडिया इज सीन वेरी फेवरेबल, वेरी फेवरेबल। एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ कि जब मैं गया ऐसे, चलो अपने गार्ड को मैंने कहा चलिए, सनोबर और शमायूं ये दो थे, चलिए और थोड़ा मार्केट घूमते हैं। उन्होंने, उनको AK-47 मिला हुआ था, उन्होंने लेना शुरू किया। हमने कहा नहीं, आराम से चलते हैं नॉर्मली, बिकॉज व्हेन यू वॉक विद 2 गार्ड्स बिहाइंड यू, पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू एंड देन यू बिकम अ टारगेट। तो हमने नॉर्मल कपड़े पहने, गए। एक शॉप में मैं गया तो उन्होंने, जैसे ही मैं गया आगे बढ़ के पश्तो में उसने बोला कि ही इज एन इंडियन कंसल्टेंट, probably he wants to buy some clothes or something. I understood just this thing, Hindi mushawir. Okay. So they still call Indians Hindi or Hind, okay, in Pashto and Dari as well. मैंने बातचीत किया उससे, मैंने कहा कि अगले शॉप में जाएंगे तो मुझे बात करने दो, आप मत बोलना। दूसरे शॉप में गए, बोले, तो उससे पहले गार्ड ने पूछा मुझसे कि आप क्या बोलेंगे। मैं बस ये बोलूंगा कि मैं तो पश्तो बोल नहीं सकता हूँ और हमारी हिंदी यहाँ पे आके उर्दू हो जाती है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि हाँ मैं पाकिस्तान से हूँ, लेट मी सी व्हाट ही इज से।
गए, बात करना आरंभ किए और till the time he asked me that from where you are, and the moment I said Lahore, Pakistan, Lahore, जी जी his expression changed. Being a shopkeeper, he should give me a service, whether I'm buying it or not buying it, or no matter from where I am. And before that, he knew that I'm from Pakistan. He was showing very amicably his things in of the shop, and his expression changed, his attitude changed. लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, मुझे बात नहीं करनी. Basically, the geopolitical situation created by Pakistan mainly just to treat Afghanistan as the backyard of Pakistan and for strategic depth has wreaked havoc not only on Afghanistan as a country, in the life of an average Afghani. An average Afghan, sorry, because Afghani is the currency. जी Okay, and on an average Afghan. And they really hate Pakistan for that. Hindus, as long as it is not coming into direct contact with their religious belief, like I, on certain days, auspicious days, I used to go first temple and then to the office. So the temple तो टीका लगा के ही जाता था मैं. जी जी No one asked me कि टीका लगा क्या हो, anything else, any special thing. Do people know about Gandhari and Kekai in Afghanistan? No. Afghan people, they don't know. Unless until we tell them, and then they say, oh, okay, might be. But they don't know, and they are not very much interested. Because of the civil war and their survival instinct, they've started filtering what to accept, what not to accept, and all those things. Their priority and the basis of priority is different than us. You see, unless until your stomach is full, you can't think about the literature, the art, and culture. So their stomach is not full. That is the reason. That's why they are not interested even. तो ललित जी, इसी पे ऐड करते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको वहां पे कभी मौका लगा कि उनके बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में हिस्ट्री के तौर पे? कभी आपको ये लग पाया? No. I mean, people to people contact was only with my colleagues. ओके Family is very sacred thing and personal thing, which is not to be discussed among friends also. But one thing I noticed, I saw that their sense of bonhomie among family. If we Hindus, we inculcate even 10% of that, or 20%, if I go by the Pareto principle, जी जी 20% of that, our 80% of family problems will be solved. जी I mean, my deputy CFO, my CEO, and another consultant, at least for these three people I know, that there were five brothers, six brothers. One of them is got a prominent or good paying job. He helped everyone. You open a shop, you open a restaurant, you start doing something, and all the family is together. So that sense of togetherness, sense of collectiveness, I think we should inculcate. We must learn, which we have forgotten. I mean, not more than 30, 40 years, 50 years, let's go back. There was, संयुक्त परिवार होता था, सब साथ रहते थे. जी जी धीरे धीरे आर्थिक प्रगति के कुछ मूल्य हमने चुकाए हैं.
एब्सोल्युटली राइट। जी। तो प्रश्नोत्तरी का ये से खत्म करते हुए अब हम इस चर्चा के अंतिम चरण पे आ चुके हैं। तो ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और वो भी आपसे जो आप वहाँ पे गए और आपने जो और चीज़ें जो इंटरनेट पे अगर आप गूगल करेंगे तो शायद ना मिल पाए इतना कुछ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि हमारे श्रोताओं को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा इसके बारे में, और हमारे सनातन रूट्स कहाँ तक हैं इसके बारे में भी हमें पता चला, और हमें गर्व है उस बात का। और जैसा कि आपने कहा कि कभी हम सशक्त होके ज़रूर वहाँ जाएँगे, हम और सशक्त ये होंगे। जी, ज़रूर, ज़रूर। और हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्या हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा उसके लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। जी, तो अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पुनः संस्कृत से ही समापन करते हुए जी, कि एक श्लोक है, आकाशात पतितं तोय यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कृत्यम केशवम प्रतिगच्छति। जिस तरह से बरसात का पानी जो है सागर को जाता है, आप किसी भी देवता को नमस्कार करें, भगवान विष्णु को ही जाता है। जी, और एक मैं इसमें अपनी तरफ से ये जोड़ूंगा कि सिर्फ दो ही देव हैं जो हमें दिखते हैं, एक सूर्य देव और एक जन्मभूमि। जन्मभूमि के प्रति सम्मान और प्रेम। तो धन्यवाद, सबको नमस्कार। और अंत में मैं आईआईटी बी फॉर भारत की तरफ से आपको फिर से नमन करता हूँ, और मुझे आशा है कि आप जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी मार्गदर्शन की, आप ज़रूर हमें हम आपके पास आएँगे ज़रूर, आपसे ज़रूर संपर्क साधेंगे और आप हमारी सहायता करेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे संचालक श्री संदीप कुमार मिश्रा जी और सुधिन जी का भी, जिन्होंने इस टॉक को ऑर्गेनाइज़ करने में सहायता की। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।